There are moments when the world feels quieter than usual. Before the sun, before the noise. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं और 130 किलोमीटर का ये रूट है और करीब 1400 मीटर का पूरा एलिवेशन गेन है। There is just a challenge I have set for myself. A line drawn on a map that has to be conquered. The plan was to leave from my front door at sunrise, ride 150 kilometers through the heart of the Wicklow Mountains, and be back by sunset. A single push, a test against the clock, the terrain, and myself. This is the story of that ride. Leaving the city behind is a feeling I have missed. देखें कितना सन्नाटा है, कोई शॉप नहीं खुली है, कोई कुछ नहीं है। With every pedal stroke, a layer of the world peels away. It's just you, the bike, and the road unfolding ahead. देखो ये जो है ये है रॉयल कैनाल जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, और वो जो हमने देखी थी मतलब देखी नहीं थी जिसके हम साइड से निकले थे वो थी लिफी रिवर। I love to capture my journey through the camera to tell a story, but in reality, the adventure itself is the real story. अब तक मैं 20 किलोमीटर लगभग कर चुका हूँ और 1.5 घंटा हुआ है अभी घर से निकले हुए। बीच में काफ़ी देर इधर उधर मैं रुक भी गया था फ़ोटोज़ वगैरह शूट करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। There is a memory of heat that lives in my bones, a memory of a sun that does not ask for permission. It is the heat of Delhi, of home, a heat that carries the scent of dust, of diesel fumes, and the sweet, milky promise of chai from a street vendor. ट्राइपॉड का मसला हो गया, पता नहीं कहाँ इसकी ये स्क्रू गिर गया। ये जो है ना बड़ा शोर कर रहा है, ये इसको मैं निकाल ही दूँ। तो अभी हमें 2 घंटे हुए हैं और हमने 25 किलोमीटर कर लिया है और लगभग अब 100 किलोमीटर से ऊपर बचा है, लेकिन अब मेन 100 किलोमीटर है क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ चढ़ाई है। ये घर कितने पुराने ज़माने का बना हुआ है, पुराने स्टाइल का। ये देखो सेब ही है ना। हाँ खट्टा कोई पका नहीं है। In India, green is a luxury. A flash of parakeet's wing, the brief, violent green of the monsoon. रुकते हैं ज़रा 2 सेकंड के लिए। ओए ओए Before the sun burns it all back to brown. Here, the green is an ocean. It swallows the light. It swallows sound. It swallows you.
धूप भी अच्छी खासी हो गई है और अब तो गर्मी सी हो रही है। कहाँ मौसम अभी तक इतना ठंडा था, अब एकदम गर्म सा मौसम हो गया। I feel an ache, a strange, unfamiliar loneliness. अच्छी चढ़ाई है। It is the Allah. loneliness of being out of context. मज़ा आ रहा है, लेकिन व्यूज़ ऐसे हैं कि सारी मेहनत वसूल है भाई, लिटरली। My memories feel too loud for this place. I think of the chaos of a Delhi local train, the press of a billion lives, the symphony of horns and voices and bells. 400 मीटर के बाद काउंटी विकलो चालू हो जाएगी। Here, the only sound is the whir of my chain, the rhythm of my own breathing, and the bleating of sheep who look at me मस्त धूप सेक रही है। with an ancient, untroubled indifference. This silence, it doesn't feel empty. It feels full. It feels like it's listening. ये देख रहे हो? हेलो। बूढ़े बूढ़े लोग हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक होते हैं, घुटने में दर्द की बीपी है कि शुगर है कि ये है कि वो है। अल्लाह। चलो थोड़ी देर इनको फॉलो करते हैं, ये भी हमारे रूट पे ही हैं। ये इनकी ग्रुप राइड चल रही है। ये लोग जा रहे हैं राइट, हमें जाना है सीधे। है ना खूबसूरत। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था।
इस व्यू से सारी मेहनत वसूल है। मज़ा आ गया। एक अलग ही व्यू है। पानी इतना साफ़ है कि एकदम नीला चमक रहा है, ब्लू, बिल्कुल साफ़ पानी है। साइकिलिस्ट हैं यहाँ पे कई सारे। हाय। Hi. Hi, how are you? Can I get one cappuccino, please? Yeah. That's everything? Yeah, that's it. Yeah. You want it? Yeah. अभी हमारा 45 किलोमीटर हुआ है, तो रिमेनिंग जो है हमारा 93 किलोमीटर अभी बाकी है। The road surrenders to gravel, a rough, honest texture that felt like true skin of the earth. My tires found a new rhythm, a steady crunch and grind that muted all the noise of the city I carried inside. The wind here wasn't a gust. It was a long, constant drone. The sound of high, open space scrubbing the worries from my ears. Incredible route. I watched the Blessington Lake water, quiet, dark, and deep. हाँ, खड़ी हो गई। देखें, अब इसमें मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके अंदर ना जाऊं। पानी देख रहे हैं, तो जाना तो बनता है। For a moment, the silence was total. It was the vast, unbroken space where the anxiety of my new life finally settled. मज़ा आ गया, मज़ा। Then, a flicker of light on the water, a sudden, simple clarity. The journey wasn't an escape from a life, but a physical paddling towards a truer one. The deep, quiet felt less like emptiness and more like promise. I was a single, moving point in this grand green composition, and for the first time, I felt perfectly placed. चलो चलते हैं। अच्छा ब्रेक हो गया यहाँ पे। अभी हमें 90 किलोमीटर करना है और 1 बज गया है ऑलरेडी। थोड़ी देर पहले हम लोग उस वाले ब्रिज पे थे। The mountain demands everything. Each pedal stroke is a negotiation with gravity. हालत ख़राब हो गई अल्लाह, लेकिन व्यू देखिए, ओए होए, माशाल्लाह। With doubt,
with the voice that questioned. वहाँ थे हम, वो ब्रिज, वहाँ से इधर. Why I left comfort for this burning in my lungs. My breath comes in measured gaps. Each inhalation a small victory against the gradient that rises before me like a wall of green and stone. अभी तो और ऊपर जाना है. एक तो धूप इतनी तेज़ हो गई है ना कि गर्मी होने लगी अब तो बहुत ज़्यादा. सुबह में जितना अच्छा मौसम था उतनी तेज़ धूप. The road leads upward with the cruel indifference of nature, testing not just my legs but my resolve. Sweat becomes baptism, effort becomes prayer. Salt stings my eyes, but I do not close them. I need to see this struggle. जो व्यू ऊपर जाने के बाद मिल रहा है ना, to witness my own transformation. सारी मेहनत वसूल हो जा रही है तुरंत. ये जो पीछे आपको व्यू दिख रहा है सिर्फ एक व्यू के लिए मैं ये क्लाइंब करके आया हूँ. पता नहीं कितना दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पूरी रिजर्वर दिख रही है. The sun beats down like a relentless teacher, and I am learning lessons written in the language of muscles and breath. इतनी क्लाइंब साइकिल से तो मैंने लाइफ में कभी नहीं की. और मज़े की बात ये कि ये दूसरी क्लाइंब है, अभी 3 और हैं. लेकिन अब जो डाउन हिल जाने का जो मज़ा आएगा उसकी तो बात ही कुछ नहीं है. हाँ, अल्लाह, आहा, सारे मेहनत वसूल. हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया, मज़ा. क्या बात है. The descent was a glorious rebirth, a long, ecstatic exhale. Gravity, once a tyrant, became a benevolent hand, pushing me into a state of pure velocity. I wasn't cycling, I was flying, a metal bird unbound. At the stream, I stopped. The water was liquid crystal, cold enough to sting. The green bank, soft and mossy, felt like the cool, forgiving palm of the earth. The cars speeding past were ghosts, their fanatic energy irrelevant to this moment of absolute crystalline peace. My heart hammers against my ribs like a caged bird desperate for fight, and I realize that this cage is of my own making. See, $70 किलोमीटर हमने कर लिया है. 70 किलोमीटर और रह गया है. बीच में थोड़ा सा थकान सी हो रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मज़ा सा आ रहा है. फिट एकदम. मौसम भी अच्छा हो गया.
और क्या बताएं, बढ़िया। एक्शन कैम की 2 बैटरी डाउन हो गई। The mechanical click echoing like a confession. I am not the strongest rider, not the fastest, not the most experienced, but I am here, and that presence is everything. Each revolution of the pedal is an act of faith, a belief that the summit exists, even when I cannot see it through the haze of exertion. My legs scream in a language I did not know they spoke, but I translate their protests into determination. This is the conversation between will and flesh, between dream and reality. The mountain does not care about my story, my journey from Delhi to Dublin, my small human struggles. विक्लो वे, विक्लो माउंटेन का सबसे फेमस हाइकिंग पॉइंट। और यहाँ पे आपको इस तरह के ये बोर्ड दिखेंगे जो बताते हैं कि किधर से रास्ता गया है। तो वो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, नीचे जाओ, ये पूरा हाइकिंग का एरिया है। It simply is, and in its indifference, I find a strange comfort. Hello, one cappuccino please. Yeah, no problem. I'll help you now. Cotton cloud. Evening light covers the roundwood watery reservoir in shades, and I am no longer the same man who left Dublin this morning. 5:30 in the evening, and the world is preparing for its daily surrender to darkness. But I am filled with illumination that no sunset can extinguish. More than 100 kilometers have transformed distance into wisdom, solitude into strength. Thank you. Each mile was a conversation with myself. Each hill a question answered not with words but with the steady rhythm of pedal and breath. The pride I feel is not the shallow satisfaction of conquest but the deep recognition of communion. I have not defeated this landscape, I have joined it, become part of its story as it has become part of mine. वो जो एक पहाड़ दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है एवरेस्ट जैसा, बिल्कुल पीक उसकी एवरेस्ट जैसी है, लेकिन वो एवरेस्ट के मुकाबले में इतना सा भी नहीं है। बट बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम वाइट और उस पर ग्रे शेड जो है वो। The cycle beneath me hums with the satisfaction of a job well done. Its frame is still warm from the day's effort. टूरिंग सेटअप लेके तो मैं माउंटेन बाइकिंग कर रहा हूँ। Its wheel is still singing the song of the road. This solo journey was never about being alone. It was about being complete. In the absence of voices other than my own thoughts, I discovered conversations I never knew I was capable of having. I made it not just to the reservoir, but to an understanding of what it means to choose your own adventure. Adventure in a world that offers so many paths. As I prepare for the final stretch home, I carry with me more than memories. I carry proof that a man who bought a bicycle and dared to explore is capable of writing his own story on the canvas of this
adopted homeland. The road home stretches before me like a familiar song, हम उधर थे. and I pedal toward Dublin with the knowledge that I am returning just not to a place but to a version of myself that has been expanded by this day's journey. In my mind, I am already replaying these moments. These memories will sustain me through the ordinary days ahead, reminding me that extraordinary is always just one pedal stroke away. चढ़ाई है लेकिन लंबी में, ये सीधी में. बाइक भी हैवी है ना, करीब 40 kg के करीब तो बाइक का वेट है, तो इसलिए ये वाला ग्रेड खींच ही नहीं रहा था. That's it. 145 kilometer, 5,000 elevation gain. Single trip. Made it. I'm feeling proud. My longest ride in a day without any trouble. Alhamdulillah.